Host, please start. Assalamualaikum everyone. I, Javedia Bauer, will be your host for today's event arranged by Air University Cybersecurity Society on cybercrime. The society aims to manage tremendous events and this is the first webinar arranged by AUCSS to highlight the importance of cybersecurity and cybercrime, which most of us don't know. As we all know that no event can be started without remembering the Almighty, the creator of whole universe. So now I would like to call Hamad Mansoor for the recitation of few verses of Holy Quran. अस्सलाम वालेकुम मेरी आवाज आ रही है can everyone hear me Yes. ठीक بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah. You can do what I cannot do. I can do what you cannot do. And together we can do great things. This event is possible today because of not only effort of one person, but the whole team. And they're the hierarchy members who always put their best to make teams united. It gives me a great pleasure to introduce the people behind all curtains who are passionate tenants who always put their best to make teams united and stellar through their work. They have done a lot for university reputation, and they are the president of AUCSS, Osama Nussair, who is in fourth semester of Department of Cybersecurity, Vice President Shahzeb Rafiq, the Department of Cybersecurity fourth semester, and the General Secretary Qazi Salim Jadoo in the Department of Cybersecurity fourth semester. Today, our guest speaker is Irfan-ur-Rehman. He is highly experienced information security and technology professional with 20 years of diverse experience. The top 10 multinational organization, cloud, VPN service provider, banking, telco, ICT industry has an expertise in security strategic planning, large-scale network infrastructure designing, ISMS state-of-the-art IT security solutions implementation, penetration testing, security assessments, project management, service management, regulatory compliance, quality assurance, and customer relationship management. He has been engaged in large national level telecom company, PTCL, as Sir Manager Cybersecurity Operations Center, Islamabad. He was responsible for countrywide information security operation and incident response. So now, I would request Sir Irfan-ur-Rehman. Sir, you please further proceed. Sir, kindly would you proceed? Sure. Sorry, my mic was. I'm really happy to know that education sector is, going to take very good interest and high interest in the cybersecurity.
थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल मेरे बारे में बता दी। थैंक यू वेरी मच। आज जब मैं आ रहा था फॉर दिस सेशन, सो इससे पहले काफ़ी सारे सेशंस में जब मैं जाता था तो मेरे माइंड में एक बात होती थी कि देयर आर प्रोफेशनल्स, दे नोज एवरीथिंग, एंड यू नो दे आर गोइंग टू आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद देम, लेट्स सी। बट जब मैं आज आ रहा था तो इससे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज में मैं गया था तो आई वाज वेरी रिलैक्स दैट सब स्टूडेंट्स हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता, एंड दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी हार्ड क्वेश्चंस। बट यहाँ इससे पहले जब मुझे थोड़ा सा नॉलेज दिया गया था अबाउट द साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी developed by Air University, so I'm expecting very good questions from you guys, and I would really appreciate, and I would be really happy to answer you guys. So I'll start with the presentation. I have a very small presentation for you guys. Let me share my screen. Can you see my screen? I hope you guys can see my screen. Is it? Yes, sir, we can see it. All right. Crime in cybersecurity. These are two things. Cybercrime comes from the cybersecurity, and cybersecurity comes from the technology. Wherever there is a technology or information engaged, uh, cybercrime can be occurred. जब इंटरनेट एस्टैब्लिश हुआ था, डेवलप हुआ था, तो the only thing was in mind कि people can have communication with the people जो बहुत दूर रहते हैं उनसे, and you know uh, they can have a communication, वो बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये सारी कम्युनिकेशन हो सकते हैं। उस वक्त तो किसी के जहन में था भी नहीं कि somebody can steal the data, somebody can use this technology for the crimes, etc., etc. So initially, the internet was created and developed for the communication only. But later, after some time, people realized that this technology can be used, can be misused as well. So वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का एक बॉर्न हुआ और बर्थ हुई, और लोगों ने साइबर सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि why this is important. Technology is there, agree. It is very useful when you want to make it useful in an appropriate and right way. But you can use the technology for the other way as well. इस अंडरस्टैंडिंग को बाकी दुनिया तो शायद बहुत जल्दी समझ गई, बट हमें समझने में अभी तक काफी देर लग चुकी है। एंड आई स्टिल थिंक कि शायद हमें अभी भी इसके ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इन यूनिवर्सिटीज, इन स्कूल, कॉलेजेस, हमारी नॉर्मल लाइफ में we all are technology users. Everyone have the mobile phone, smart devices, but we are still, at the very low level of cybersecurity understanding. So these are the only reasons why cybercrime is occurring here, in fact across the globe as well. But बाकी countries में चूंकि cyber security की understanding हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, so वहाँ पर cyber crime की ratio और जो value है वो आपको थोड़ी सी कम नजर आएगी. Where are we now? हम सब स्मार्ट डिवाइसेस यूज तो कर रहे हैं, फेसबुक भी उसके ऊपर हमारा इम्प्लीमेंटेड है, इंस्टॉल है, लिंक्डइन, ट्विटर, एवरीथिंग इज देयर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द एप्लीकेशंस. ठीक है, एप्लीकेशंस आर देयर सो यू कैन इंस्टॉल, बट द थिंग इज हाउ यू आर ऑपरेटिंग देम. आप और मैं और हम जैसे बाकी सारे लोग, हम तो शायद फेसबुक सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि अपलोड दी स्टेटस, मैं डिनर कर रहा हूँ, आई एम देयर, आई एम विद फ्रेंड्स, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस. बट उसके
अदरवाइज लोग उसको मिसयूज कैसे कर सकते हैं? वी डोंट नो दैट। उस वक्त तक जब तक हमारे साथ कोई मिसअप हो नहीं जाता। सो बेसिकली वी आर एट द स्टेट कि शायद हमारा सारा डेटा कंप्रोमाइज्ड है ऑलरेडी, शायद हम लोग वल्नरेबल हैं और एक्सपोज्ड हो चुके हैं, बट हमें नहीं पता बिकॉज वी डोंट नो। एक बीमार को उसकी बीमारी का पता तभी चलता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के जाने से पहले उसको उस वक्त तक पता नहीं चल सकता जब तक उसको कोई पेन ना हो। सो हम उस स्टेट में कि बीमारियां मौजूद हैं, वो बीमारियां उस हद तक जा चुकी हैं कि वो हमें मार सकती हैं, बट हमें अभी तक नहीं पता बिकॉज हमें पेन फील नहीं हो रहा। पेन फील नहीं है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। सो हम Sir, जी सॉरी। I'm sorry to interrupt you, sir. Kindly close your browser because we can't see your presentation. You can't see my presentation. No, sir, we can't see your presentation. Wait. From the first page, you didn't see any page? Sir, we don't see any page. Okay. Wait. Can you see now? No, sir. Okay. Let me share again. Okay, sir. Now? Yes, sir, we can see your presentation. Okay. Sir, we Now? don't see any page. Now? I'm sorry to interrupt. Yes, sir, we can see now. Okay. Fine. No problem. Thank you, sir. So, we are still on the state जिसमें हमें पता नहीं कि हमारे साथ हो क्या चुका है, हो क्या रहा है। वो तब हमें पता चलता है जब कोई हमें एक फोन कॉल आती है, कोई हमें मैसेज करता है, आई हैव द डाटा, पे मी और इधर आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू। और उसमें काफी सारा फॉल्स डाटा भी हो सकता है, सो यू कैन नॉट वैलिडेट दैट। ओके। हैकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एस्टैब्लिश हो गया, इंटरनेट इज देयर, कम्युनिकेशन इज देयर। हमें समझ नहीं है कि हम हमारे साथ हो क्या रहा है और अभी तक हो क्या चुका है और डाटा कितना एक्सपोज्ड है हमारा, हम कितने एक्सपोज्ड हैं। तो जब इन अटैक्स और इन क्राइम्स की बारी आती है तो सबसे पहली चीज इसमें हैकिंग। somebody is going to hack your computer, hack your device, smart device or anything. So उस हैकिंग के पीछे उनके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हो सकते हैं उनको। तो if somebody is going to hack your computer, if you are a normal layman user, so आपका पर्सनल डाटा हो सकता है, उसके लिए they are going to claim for a money, ask you for a money. So that could be the one reason. That could be like maybe there is anyone from your relatives who wants to blackmail you, maybe your friends. उस hack के उसमें उसके तरीकेकार क्या होता है? How they gonna hack your computer or smart device? Number one, communication medium. How they going to connect to your device? For the connectivity, the hacker needs only one vulnerability or one weak point. That could be a human weak point, that could be a technology weak point, that could be anything. Let's say you are a Facebook user and I want to hack your computer. So first I connect to you over the Facebook. And I know that you are very open on the Facebook. You can share anything on the Facebook and you have shared many of things on the Facebook. So before communicating with you, I can get, you can say 70% of the information from your Facebook profile. What do you like? Where do you go? Who are your friends? Blah, blah, blah. So hacking into your computer, your Facebook profile is helping me out up to 70%. For the 30%, I have to put my efforts. I can use some malwares. I can use some uh, backdoors. I can use anything. I can send you a file. I can send you anything. So and that's how I can go into your computer and I can compromise your computer and I can get the access to your computer, and that's how I can get all of the data. So we have to be aware of it. Cyber stalking. Maybe most of you guys aware about it. This is the same thing. If somebody is, hacking your computer, of course there must be some reason for that. He's going or she's going to hack your computer. And the reason could be for the money, reason could be for any personal benefit, any personal thing. So we have to be aware of it as well. Email spam and phishing. This is the main common attack
which is being used by all of the attackers and hackers. Once I get to know your interest, I can send you an email and I can ask you for anything, and you will be providing it for sure, because you don't have the awareness of cybersecurity and you don't know if either you can be hacked by someone. So this is an example of US bank, somebody having an account in the US bank, and if they receive any email from the US bank for any, they, if you can see the information, this is a service message regarding your online account, please read. So there they create your interest, dear valued customer. This is a service message alert regarding the irregular activities we notice on your account. Please find attached, download and attached file and fill all the requested information to complete the verification process to prevent your account from being blocked. So जो मेरे जैसा आप जैसा लेमन यूजर होगा वो तो सिंपली उसके ऊपर उसको डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद पता चलेगा तो उसके अंदर तो है ही कुछ नहीं, इट्स सिंपल फाइल जो वर्ड में भी नहीं खुल रही, एंड यू विल बी कंप्रोमाइज्ड. So this is one of the example. Right now, अभी जो COVID के pandemic चल रहा है, so in that case, if I send an email to you, this is the remedy of the coronavirus. Everybody is going to open. Everybody is going to open that document, and after opening the document, he'll be hacked. So we have to be aware of it. मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ियां आ रही होती हैं, आपको कहाँ पे लिखा सिखाया है कि जब गाड़ी आ रही होती है तो यू हैव टू वेट फॉर इट, जब तक गाड़ी गुजर जाएगी तो यू कैन गो. सो हमें अपना माइंडसेट सिक्योरिटी का डेवलप करना होगा जस्ट लाइक दिस. So we have to think like about this, think like a cybersecurity professional. No matter I'm a doctor, I'm a HR person, I'm a finance person, I have to think like a cybersecurity guy or like attackers. So this is how we can develop our own mindset. और जब तक mindset नहीं होगा, technology और processes और ये चीजें आपको और मुझे help नहीं कर सकती. जब तक मैं खुद understand नहीं करता. If you can see that email spam and phishing, this is a US bank email. अब अगर एक बंदा सोचेगा एक अटैकर की तरह, तो first he will see what is the email. email मुझे आ कहाँ से रही है. Number 2, he will see the body, the text body. वो मुझे लिख क्या रहा है. Unknown activities, the unwanted activities. So why? सबसे पहले क्वेश्चन तो जहन में आपकी आना चाहिए कि why should I download that document and fill out? What is fill out? Why should I fill out? If you have noticed that there is unwanted activity running on my account, so you should be knowing about it. Why? What you are asking from me. Number 2 thing is bank wants to get to know something from you for the verification or for the analysis. So bank have all the data. They can look into it and they can come up to you after the complete analysis. Why they're asking you for the information. So this is how you have to think about it. अगर आप ऐसे नहीं सोचेंगे और आप सिंपली इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो आई एम सॉरी, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी डिवाइस, कोई भी सोल्यूशन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. Nothing can help you. ऑनलाइन स्कैम एंड फ्रॉड पाकिस्तान में तो शायद इसकी रेशो बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारे जो विलेज के अंदर लोग हैं, विलेज को भी तो छोड़ें, आप इस्लामाबाद के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं. आई हैव सीन मैनी ऑफ द केसेस. You have got this job, for this you have to pay this, and blah blah. इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं. In fact, कुछ लोगों को इस तरह की ईमेल आ जाती है कि we have accessed your webcam and we have made your family video and blah blah blah. Pay me or either I'm going to expose you and blah blah blah. So, and people pay for it. Now the question is, if somebody is asking you, if somebody is telling you कि मेरे पास आपकी info है, what info वो आपको नहीं बता रहा, ठीक है? तो you never know कि what do he have. So in questions or in attacks से prevention के लिए you have to be very careful. You have to be very careful using the social media. You have to be very careful using internet and sharing the information with anyone. So अगर आपने ऐसी कोई information किसी का share नहीं की, आपने अपने laptop को, smart device को protection में रखा हुआ, so you don't need to worry about it. You'll simply ignore those messages. और scam सिर्फ ये नहीं कि आपको false messages वो दे रहा है,
कि जी I have this. It could be anything. It could be about your bank. It could be about saying that I am your teacher and I need this, and you're going to, send them because you know that this is your teacher, and there's a trust factor they develop. So this is how scams and phishing attacks. These are all under the email attacks. So we have to be careful about that. Tomorrow's terrorist may be able to do more damages with a keyboard than with a bomb. जो पहले wars होती थी वो सब bombs और इन टेक्नोलॉजी और इन चीजों को यूज करते हुए होते थे, बट अब चूंकि आपका जो इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, it doesn't need any borders, उसमें कोई border नहीं है, उसमें किसी ऐसे वेपन की जरूरत नहीं है. This is an open world. Anything is connected to internet or the network is open to the world. The trick is how you get into it. So if you are over the network, if you are using any technology, you have to be double careful because maybe you don't know कि आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है या आपने जो प्रोटेक्शन इन प्लेस रखी हुई है उसमें दो चार कंट्रोल्स ऐसे हैं कि जो आपने फॉर योर ईज आपने उसको लूज रखा हुआ है. जस्ट लेट्स मी गिव यू एन एग्जांपल. आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड रखा हुआ है, योर डॉटर्स नेम, योर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ. सो आपके लिए कि कौन इतना लंबा पासवर्ड याद रखेगा? जस्ट मेक इट सिंपल. सो वो जो एक आपने अपने लिए ईज के लिए एक छोटा सा पासवर्ड उसके पे आपने कंप्रोमाइज किया, दैट कुड लीड यू अप टू द वेरी बिग डिजास्टर. You have to think about it. Here are some do's and don'ts I would like to share with you guys. Loss of confidential data, junk spam emails, account unauthorized access, virus worms, trojans, malwares, personal data leakage. ये सब वो रिस्क है जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते. सो यू आर कैरिंग ऑल दीज रिस्क, ऑल दोज रिस्क. व्हाट यू हैव टू डू, वैलिडेट द वेबसाइट यू आर एक्सेसिंग. जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं प्लीज वैलिडेट दैट. इधर वो HTTP है या HTTPS है. आई थिंक ऑल द लिसनर्स आर टेक्नोलॉजी folks, so you really knows that what is the HTTP and what is HTTPS. HTTP is a plain text protocol to communicate between the web server and your system. इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम से जो उस वेब सर्वर तक की जितनी भी कम्युनिकेशन, दैट इज अ प्लेन टेक्स्ट. कोई इंक्रिप्शन नहीं है उसके अंदर. एनीबॉडी कैन सी दैट. इट्स जस्ट लाइक कि आपने यहाँ से अपने एंड से किसी दूसरे शहर में कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और वो एक ऐसे फॉर्म में जो एनीबॉडी कैन रीड दैट. तो अगर बीच में कोई उसको रीड करके उसमें चेंजेस करके दूसरा वहां ट्रांसफर कर देगा तो आपको एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो इन्फो मैंने दी है वो वहां पहुंचनी चाहिए और ऐसी पहुंचेगी, लेकिन वहां क्या पहुंची यू डोंट नो, और वो आपके बारे में कितना जान गया यू डोंट नो. HTTPS इज ए सिक्योर चैनल. सिक्योर चैनल का मतलब ये है कि आपके सिस्टम से लेके वेब सर्वर तक जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर है. सो इफ यू आर सेंडिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन on that communication link, that will be secured. उसमें कोई थर्ड पार्टी आके बीच में देख नहीं सकता. मैन इन द मिडल कुछ नहीं हो सकता. इंस्टॉल पर्सनल फायरवॉल्स. पर्सनल फायरवॉल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपने घरों के अंदर एक फायरवॉल प्लेस कर दें सिस्को की जुनिपर की और पालो अल्टो एंड ब्ला ब्ला ब्ला. पर्सनल फायरवॉल could be a Windows default firewall. There are some open source free firewalls as well. You can use them at least. At least you can use them. मैं यहाँ पर अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है. कुछ लोग कहते हैं कि आप जितना मर्जी सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर दें, स्टिल देयर इज अ वे. यस ऑफ कोर्स देयर इज अ वे. यू कैन नॉट बी 100% सिक्योर, बट एक तरीका तो ये कि मैं सारे घर के दरवाजे खुले छोड़ दूं और चोर को कहूं आ जाओ चोरी कर लो. नंबर 2, मैं अपने घर में दरवाजे लगाता हूँ, खिड़कियां लगाता हूँ, लॉक्स लगाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करता हूँ. सो मैं अगर ये खड़ा करने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती, तो अगेन दिस इज रॉन्ग. चोरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट जो चोर आएगा he will face some difficult time. उसको सब इजी नहीं मिलेगा. और मे बी चोरी करते वक्त गार्ड को बाईपास करते हुए, सिक्योरिटी लॉक को बाईपास करते हुए या तोड़ते हुए, anybody can get to know that कि there is something going on. So ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने के लिए, ताकि चोर उस वक्त तक जब चोरी करने से पहले ही हो सकता है कि हम उसको पकड़ लें. यूज इंक्रिप्शन.
encryption is by default there in the Windows systems. Already उसमें सिर्फ आपकी उस फीचर को आपने enable करना है. There is a BitLocker. वो क्या करता है, आपकी जितनी भी पर्सनल डाटा है उस सिस्टम के अंदर उसको इंक्रिप्ट कर देगा. तो आप उसको इंक्रिप्ट करके रखें. अक्सर लोग इसमें एक मिस्टेक करते हैं, जहां पर जिस ड्राइव को या जिसको भी आपने इंक्रिप्ट किया है उसकी इंक्रिप्शन की उसी सिस्टम के ऊपर वो सेव कर लेता है. सो इफ समबडी इज गोइंग टू, somebody have hacked your computer, तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये डाटा तो मैंने इंक्रिप्ट करके रखा हुआ है, ये तो नहीं खोल सकता. सो वंस ही विल हैव एक्सेस टू योर सिस्टम, तो ऑफ कोर्स उसको की भी वहीं से मिल जाएगी, तो वो की से आपकी डाटा को वैसे ही डिक्रिप्ट कर देगा. सो यूज इंक्रिप्शंस बट डू नॉट स्टोर द इंक्रिप्शन कीज इन द सेम सिस्टम. Keep them saved somewhere else on the external storage or somewhere else, not even the emails. Install and updates antiviruses. कोई भी antivirus, every antivirus is same. सब antiviruses signature based होते हैं. दुनिया में जहां पर भी जितने viruses आते हैं, जैसे ही वो वायरस आता है उसके लिए एक पैच, उसके लिए एक सिग्नेचर अपडेट हो जाता है जो सारे एंटीवायरसेस को मिलता है. कुछ को थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, कुछ को थोड़ा सा बाद में मिलता है, बट एटलीस्ट डू यूज any of the antivirus. Regular backups of your critical data. आपका जो भी critical data है उसके backup जरूर रखें. If there is a ransomware और आपका data encrypt हो जाता है and you are not going to pay them, so आपका वो data तो क्या? You have to, put the time again और आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी. इस पॉइंट के ऊपर मैं कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा. Critical data. Critical data is a very open statement. For me, my critical data is maybe my family pictures, maybe my passwords. For you, maybe the critical data definition is different. So everyone have to analyze. There is no checklist about the critical data. मैं आपको नहीं बता सकता कि what is critical to you. You have to analyze which data is critical to you. आपके पास ऐसा कौन सा डाटा है जो कोई मिसयूज कर सकता है, जो आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है या आपको उससे नुकसान दे सकता है. सो यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट, क्लासिफाई योर डाटा. आपके पास जो डाटा है उसमें से कौन सा डाटा ऐसा है जो आपके लिए क्रिटिकल है. देन पुट गेट द बैकअप्स, encryptions and all this stuff. Scan all email attachments before opening. अगर आप हॉटमेल जीमेल यूज करते हैं तो वो तो विदाउट वायरस स्कैनिंग आपको कुछ भी ओपन नहीं करने देता. बट इफ यू आर यूजिंग एनी पर्सनल ईमेल, पर्सनल कॉर्पोरेट ईमेल जो हॉटमेल जीमेल इनके ऊपर नहीं है, तो प्लीज डू नॉट ओपन देम विदाउट स्कैनिंग. हो सकता है कि आपके कॉर्पोरेट ईमेल के ऊपर एक एंटीवायरस, कॉर्पोरेट एंटीवायरस चल रहा होगा. बट अगेन, फॉर द डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, you should have the endpoint security protection software antivirus with you on the system, and whenever you are opening any email, तो आप उसको स्कैन जरूर करें with your antivirus software. Use digital signatures to send emails. This is commonly used for the corporate emails. आपकी कोई भी corporate email, let's suppose Zen wants to send an email to one of the colleague in the university, so he should digitally sign it. So अगर वो email किसी और जगह कोई और ओपन कर भी लेता है, so he will not have the encryption certificate or key with them जिससे वो उसको रीड कर सकते हैं. प्लस इससे आपको फायदा क्या होगा? नंबर वन, जो रिसीवर है, he'll get to know that this is original Zahan. It's not someone who is doing the phishing or spamming. So एक identity validation के लिए you can use digital signatures for sending emails. Patch the system regularly. अक्सर लोग, मैं सिस्टम्स के ऊपर देखता हूँ, मोबाइल्स के ऊपर अपडेट्स आई हुई होती हैं, nobody bothers to update it. वो अपडेट्स क्या होती हैं? वो अपडेट्स यूजुअली जो सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं, वो यूजुअली आपके अगर ओएस के अंदर या एप्लीकेशंस के अंदर कोई सिक्योरिटी बग है, कोई फ्लॉ है, तो उसको फिक्स करने के लिए वो सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं. जो सिस्टम अपडेट्स होती हैं, दीज आर टू फॉर योर सिस्टम परफॉर्मेंस. तो आप जरूर इन अपडेट्स को जरूर अपने सिस्टम को जरूर अपडेट किया करें, उसको इग्नोर मत करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार डाटा यूज हो जाएगा, ब्ला हो जाएगा, ये हो जाएगा. दिस इज फॉर योर प्रोटेक्शन, सो मस्ट यूज देम. Don't visit untrustworthy sites out of curiosity. Check for the certificate. आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो जहां पर उसका URL लिखा आता है HTTP HTTPS, वहां पर अगर वो HTTPS है तो उसका एक सर्टिफिकेट आ रहा होता है.
must read that certificate. क्या वो किसी का इन पर्सन कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर में आने का मतलब ये है कि he can get the access of your browser. So please visit, do check them कि वो जो वेबसाइट है उसका सर्टिफिकेट किसका है. It should be ideally signed by a verisign, and there are some CA certificate providers जो उसको sign करते हैं जो globally trustworthy हैं. अगर उसके अलावा कुछ है तो don't open it. Don't open email attachments without sandboxing. हमने बात की थी स्कैनिंग की. Scan is okay within the corporate sector. ये corporate के अंदर अगर ABC, anyone in the university is sending email to XYZ, तो वो within the email server एक send receive हो रहा है. So that is okay if you are opening with the after scanning with the antivirus. But if you are receiving any email from the outside the world, so स्कैन हो सकता है कि अगर उसके अंदर कोई मालवेयर है, कोई ऐसा कोड है, उसको शायद डिटेक्ट ना करे इफ द कोड इज न्यू. तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप सैंड बॉक्सिंग करते हैं. सैंड बॉक्स क्या, विंडोज ने एक बहुत अच्छा फीचर दे दिया. अब आप किसी भी विंडोज 10 के अंदर जाएं तो यू हैव टू इनेबल द वीएम फीचर. आप वीएम को इनेबल करें, इट विल गिव यू अ टेम्पररी विंडोज 10 क्लोन कॉपी ऑफ योर ओन विंडोज. आप उसके अंदर उस ईमेल को ओपन करें और उसके अंदर कुछ ऐसा होगा भी डिजास्टर जो कर सकता है, सो दैट विल नॉट अफेक्ट योर कंप्यूटर. आपको वहीं पे आइडिया हो जाएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग. सो आप उसको अपने जो ओरिजिनल विंडोज है उसके अंदर रन नहीं करेंगे और आप एक डिजास्टर से बच जाएंगे. नेवर डाउनलोड pirated or cracked software. Keep in mind that, trust me, nothing is free. अगर आपको किसी भी वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर क्रैक मिल रहा है, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू, दैट इज $1,000 और $500 और वट एवर, अब वहां से जब आपको फ्री मिल रहा है तो दिस इज नॉट फ्री. इन अदर केस, इन द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यू आर पेइंग द डॉलर्स. इन दिस केस you are paying your data, your info. So now you have to decide, either pay the dollars or either pay your personal data. So do not use any pirated or cracked softwares. Don't click on links embedded in spam emails. आपको जितनी भी स्पैम ईमेल्स आती हैं, यूजुअली जंक ईमेल्स जो आपको आती हैं, तो उसके अंदर समटाइम आपको कोई ईमेल बहुत यूजफुल नजर आती है, शायद इसको वैसे ही मेरे ईमेल सर्वर ने जंक कंसिडर कर लिया, तो आप उसके अंदर जो एम्बेडेड लिंक्स होते हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं. अगर आपको उसको देखना भी क्यूरियोसिटी, आप मे बी यू आर थिंकिंग कि इट्स अ राइट ईमेल बट ये जंक के अंदर आ गई, तो अगेन आप उसको सैंडबॉक्स के अंदर ओपन करें. डू नॉट ओपन इन योर ओन ओरिजिनल सिस्टम. Don't click on pop-up windows that tell you that your computer is infected with a virus. Usually आप सब लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि आपको अक्सर एक पॉपअप आता है योर सिस्टम इज इन्फेक्टेड, और हम लोग उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं. एक दो पेजेस के ऊपर वो आपके इंटरेस्ट की बात ये बताता है कि देयर आर 1,000 वायरसेस, देयर आर 1,000 बॉम्ब्स, ब्ला ब्ला ब्ला, क्लिक नेक्स्ट टू फिक्स देम. जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, इट विल गिव यू अनदर पेज जिसके ऊपर वो आपसे पैसे मांगेगा. यूजुअली इस तरह के जितने भी पॉपअप्स हैं वो बेसिकली जो दो आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं उसी के अंदर वो आपके सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं. सो नेवर 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 एवर क्लिक ऑन दैम. बीइंग अ सोशल मीडिया यूजर, मैं किसी को ये नहीं कहता कि डोंट यूज सोशल मीडिया, डू यूज, बट थोड़ा सा आप केयरफुल होकर मेक योर सोशल नेटवर्क प्रोफाइल, either it's a Facebook, Twitter, YouTube, etc. are set to be private. आप उसको private configure करें. Check your security settings. Be careful what information you post online. Once it is on the internet, it is extremely difficult to remove. आप जो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो once जब आपने उसको पोस्ट कर दिया और उसको 10 मिनट्स गुजर गए, if somebody have shared it next, और यहाँ वहां से उसने कॉपी करके नेक्स्ट आगे पोस्ट कर दिया, तो आप अपने सिस्टम, अपनी प्रोफाइल से तो शायद डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उनसे डिलीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ हिज अकाउंट. सो उसके अकाउंट से यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू रिमूव फ्रॉम देयर. सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, अगेन बी केयरफुल. आप फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी पोस्ट करते हैं, थिंक डबल ट्वाइस थ्राइस, हमेशा उसको जरूर सोचें कि व्हाट आई एम गोइंग टू पोस्ट, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकता है. Do think about it.
Ignore the unwanted messages or emails. आपको कोई email ऐसी आ रही है जो जिसको आप नहीं जानते, कुछ भी ऐसा नहीं, just ignore them. उनको आपको रीड करने की, रिप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है. You don't need to. Never store your own details on mobile devices. Security, mobile devices, secure mobile devices. आपके जितने भी पर्सनल डाटा हैं या पर्सनल पासवर्ड्स हैं, उनको कभी भी आप अपने मोबाइल डिवाइस या एनी अदर जो आपके कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर सेव मत रखें. मुझे पता है कि इट्स वेरी इजी कि आप अपने पासवर्ड सेव कर लें ब्राउजर के अंदर, फेसबुक मैसेंजर के अंदर. इट्स ऑलवेज इजी टू यूज. बार बार कौन पासवर्ड एंटर करेगा? सो नॉर्मली पीपल डू दैट, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. If someone get access to your browser, you can simply get all of your passwords. तो आपको तो ये लगे कि शायद मेरा फेसबुक सिर्फ compromise, but no, you get all the passwords because the passwords are saved in browser. So never ever use them, never ever save them. Ignore pop-ups. As I discussed earlier, pop-ups जितने भी आते हैं उनको ignore करें. आप उन पे क्लिक कभी भी मत करें. Only shop online or secure sites. Secure site का मतलब क्या? अभी मैंने जिक्र किया था HTTP and HTTPS and the certificate. So there are three things. Think, see, look into it. आपका जो URL आ रहा है जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हैं, क्या वो HTTP तो नहीं है? Because of course, when you will, add the uh, product in your bucket, so at the end they will ask you for the uh, postal details and your credit card details and other things as well. So अगर वो HTTP है, तो somebody can take the data between you and the web server. और वो रीड कर सकते हैं. इनफैक्ट जो वेब सर्वर के कस्टोडियंस हैं, दे कैन आल्सो रीड योर क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड थिंग्स. सो नेवर यूज. आप HTTPS को जरूर फॉलो करें कि इससे HTTPS, देन अगेन उसके सर्टिफिकेट को आप देखें. हु इज द साइनर ऑफ दैट सर्टिफिकेट? क्या वो XYZ इरफान ने किसी ने साइन किया है उसको? सो इरफान इज ऑनर ऑफ दैट सर्टिफिकेट and he can look all of your details, whatever you are sharing on that web. So ये तीन steps है, इसको जरूर follow करें. Different site, different passwords. Don't use same key for all locks. This is the main thing. Commonly, usually सारे लोग एक ही password use करते हैं for the Hotmail, Gmail, Facebook, Twitter, blah blah blah. For the sake of ease. कि कौन नए नए passwords याद रखेगा? Please don't do that. इसका मतलब ये कि अगर मैं आपका एक password crack करता तो I don't need to put more efforts. I'll have password to all of your accounts. So don't use it. Don't do that. इसमें एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगा. Do not keep your password for months. Change it at least after 2 months. At least after 2 months. इसको लॉन्ग टाइम के लिए उन पासवर्ड्स को मत यूज करें. हमेशा उसको चेंज कर लिया करें. Always use dual multi-factor authentication for your personal corporate email accounts and social media accounts as well. What is dual and multi-factor authentication? अगर आप लोगों का इसमें कभी आप लोगों को नजर नहीं आया तो if you go to the security and accounts in your Facebook, in your Gmail and Hotmail, it will give you that the option. Multi-factor, dual factor means only password is not validating that this is Irfan. When you are putting your password in the Facebook account, it will send you a code on your registered mobile phone, which you have mentioned while creating your profile. So वो जो कोड आएगा वो कोड आप दोबारा एंटर करेंगे, then it will validate this is Irfan. Otherwise anybody can see my password and so they can use that. अगर आपने dual factor authentication on नहीं किया, so I just need to get your password and I can go into your account. I can do anything. So do use that. This is free. A strong pin key lock code password. Password set करना, pin lock, this is one thing, but it should be strong. What is strong? What do we mean by strong? Strong का मतलब ये नहीं है कि मैं एक पूरी लाइन लिख दूं, this is Irfan, so I can say that alphabets मैंने काफी ज़्यादा use कर. No, you have to use lowercase, uppercase, special characters, numeric keys, and all these things. इन सब के ऊपर include करके you have to make your password. और strong password हमेशा वो होते हैं जो आपको खुद भी याद नहीं होता. That is a strong password. जो password आपको याद हो गया, this is not strong password. That means anybody can, store it.
प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा की भी हमने बात की थी। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज योर सेंसिटिव डाटा, प्रोटेक्ट दैट, प्रोटेक्ट वंस। जो सिस्टम के ऊपर आपका डाटा, यू कैन प्रोटेक्ट इट थ्रू इंक्रिप्शन। आप उसको इंक्रिप्ट करके रखिए और इंक्रिप्शन की आप किसी और जगह से रखें। प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव डाटा ओवर द सोशल मीडिया, डोंट मेक इट पब्लिक। आपने अगर कुछ ऐसी इन्फो, कोई अपनी पिक्चर्स कुछ देना भी, तो मेक इट प्राइवेट, आप उसको प्राइवेट रखें। बट अगेन आई विल नेवर सजेस्ट कि आप अपना कोई भी पर्सनल सेंसिटिव डाटा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अपलोड करें। नेवर डू दैट। हॉटस्पॉट्स, आपने हर जगह यहाँ मॉल्स में देखा होगा, दे आर ऑफरिंग फ्री हॉटस्पॉट्स, और हम अपने डाटा के 2 4 5 10 रुपए बचाने के लिए हम उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं। दैट हॉटस्पॉट इज बेसिकली getting all of your data, the communication data. So never use free hotspot. Never ever use free hotspot. अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसपे आपने सिर्फ ब्राउजिंग करनी है और उसके ऊपर कोई पर्सनल डाटा नहीं, देयर इज नथिंग, यूज दैट those hotspots just for the internet surfing, that's it. But वहाँ कोई पर्सनल अकाउंट कुछ भी ओपन मत कीजिएगा। वॉच योर वायरलेस। आपका जो वायरलेस कनेक्शन, अगर आपने हॉटस्पॉट कहीं कनेक्ट कर भी दिया या किसी जगह आपको जरूरत है, इमरजेंसी है, एंड यू आर यूजिंग योर पर्सनल फोन, जो आपका प्राइमरी फोन है, वो आपको कनेक्ट करना पड़ भी गया है, तो वॉच दैट वायरलेस कनेक्शन, क्योंकि उसके ऊपर डाटा कितना ट्रांसफर हो रहा है, आप उसके ऊपर क्या यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज यू हैव टू एक्सेस दैट हॉटस्पॉट, फ्री हॉटस्पॉट फॉर योर एक्सेसिंग द ईमेल अकाउंट, जिसके ऊपर आपको किसी ईमेल में किसी फोन नंबर चाहिए। सो द डाटा शुड बी इन किलोबाइट्स, और वो थोड़े से किलोबाइट्स होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। बट अगर वो डाटा बहुत तेजी से सेंड रिसीव हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपके सिस्टम में से, आपके लैपटॉप या फोन में से कोई डाटा और भी जा रहा है थ्रू दैट वायरलेस कनेक्शन। सो जस्ट स्टॉप इट और लुक फॉर एनी अदर ऑप्शन अगर आपके पास वहाँ के अवेलेबल हो तो, बट डोंट यूज दैट फ्री हॉटस्पॉट्स एंड वायरलेस कनेक्शंस। ब्लूटूथ, यूजुअली लोग अपना ब्लूटूथ अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के ऊपर ऑन रखते हैं। लैपटॉप पे यूजुअली अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता वो ऑन होता है। फोन के ऊपर तो शायद लोग ऑफ करके रखते हैं कि शायद वो बैटरी कंजप्शन ज्यादा होती है, बट लैपटॉप के ऊपर यूजुअली वो ऑन होता है। अब लैपटॉप के ऊपर आप यू कैन सी दैट कि आप तो वायरलेस कनेक्शन को देख रहे होंगे, अपने केबल कनेक्शन को देख रहे होंगे कि डाटा कितना जा रहा है, बट यू नेवर नो, कोई आपके ब्लूटूथ को कनेक्ट करके आपसे डाटा एक्सचेंज कर रहा होगा, कोई वायरस आपको भेज रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। सो डू लुक इनटू सेटिंग्स ऑफ द ब्लूटूथ एज वेल। कॉशन विद एप्लीकेशंस, यूजुअली जब हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इधर ऑन द फोन और इधर ऑन द सिस्टम, हम उसके प्रिकॉशंस रीड नहीं करते, हम उसके कॉशंस रीड नहीं करते, हम नेक्स्ट 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 कर देते हैं। जस्ट फिनिश इट एंड इंस्टॉल। तो उसको जरूर देखा करें कि वो आपसे परमिशंस क्या मांग रहे हैं, आपको बता के रहे हाउ दिस सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू रन, उसको जरूर पढ़ें। उसमें आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, देयर इज अ application, it's a game, Ludo. Now Ludo is an online free game, everybody is using it. अब अगर आप उसके एप्लीकेशन की कॉशंस के अंदर पढ़ें, तो दे आर एक्सेसिंग योर वेबकैम, दे आर एक्सेसिंग योर mic, they're accessing your contacts as well. Now, what is the use of all these privileges? इस एक लूडो एप्लीकेशन के लिए इन 3 privileges की जरूरत क्या है? Why they're asking? That means they are giving you a free Ludo game, but in return they are getting all of your data. So always look into it. आप उसको हमेशा देखें। Security software, antiviruses, anti-spam और इन चीजों को जरूर इंस्टॉल करके रखें। These are the do's for security. अच्छा, हमने ये तो कह दिया है कि टेक्नोलॉजी के अंदर हम उसको मिसयूज, लोग उसको मिसयूज कैसे कर सकते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट इन सब चीजों का ओवरऑल सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज consensus, coordination and cooperation is the key. Either we will swim or sink together. इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब हरगिज सिर्फ एंड यूजर की तरफ नहीं है। This is all about the organizations, the different sectors in Pakistan who are directly or indirectly stakeholders of the internet and network and communication and telecom and financial sector as well. So
I would suggest there are, I feel like there are four pillars: education sector, financial sector, telecom sector, and media. I would suggest education sector should look into cybersecurity subjects to be mandatory in the university. अक्सर यूनिवर्सिटी से जब मेरी डिस्कशन होती है तो दे से HEC does not allow or HEC does not approve those subjects for as mandatory. तो मैं अक्सर सवाल किया करता हूँ कि there are many other things जो यूनिवर्सिटी बगैर HEC के अप्रूवल के इंटरनली लोगों को ट्रेन करवा रही होती है और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. So why don't you offer a cyber security subject no matter HEC ने उसको प्रूफ किया नहीं किया for you or not. And if there's a cost involved, you can add only few thousand, or once they come into the industry, so they will have a lot of things with them already. और उनको एक बहुत शुरू से उनको वो चीजें नई नहीं लगेंगी, so they will have the understanding. Industry requirement research पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में भी. But my suggestion is, why don't you work on the industry requirement research? Industry की requirement क्या है? To be very honest, with all due respect, unfortunately, research work जो हो रहा है, I would rather say we are reinventing the wheel. वो research work जो पहले कोई कर चुका है, हम still उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, like SEAM and all this stuff. So we need to look into it कि हमारी industry की requirement क्या है, पाकिस्तान की requirement क्या है. We should look into it. We should work on it. हमें उस research के ऊपर काम करना चाहिए. Current cyber security threats. इस वक्त जो करंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हमारे मुल्क को, हम लोगों को, एंड यूजर्स को, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए. एक स्टूडेंट जिसका काम ही सिर्फ पढ़ना है, रिसर्च वर्क करना है, आई थिंक कि अगर वो इन चीजों को करेंगे तो दे कैन कम अप विद सम गुड वैल्यूज, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इसके ऊपर काम करना चाहिए. साइबर सिक्योरिटी लीड्स जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं हूँ, I started my professional career in 1999. जिस टाइम साइबर सिक्योरिटी का नामो निशान भी नहीं था. तो मैंने एक ISP से स्टार्ट किया, डिफरेंट कॉल सेंटर्स के साथ काम किया, BPOs के साथ, डिफरेंट बैंक्स के साथ काम किया, टेल्को के साथ काम किया. हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते जा रहे हैं. सो दीज स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं, दे आर द रियल साइबर सिक्योरिटी लीड्स. जब ये लोग यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे तो अगर इन्होंने इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट रिसर्च के ऊपर काम किया, दे नोज द साइबर सिक्योरिटी करंट थ्रेट्स, एंड उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को पढ़ा है, सो दे आर द रियल साइबर सिक्योरिटी लीड्स जो आगे लीड करेंगे साइबर सिक्योरिटी को. इसमें एक चीज मैं और सजेस्ट करना चाहूंगा टू यूनिवर्सिटीज, साइबर स्काउट्स. अच्छा, साइबर स्काउट्स आर नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट ऑफ CS डिपार्टमेंट. जरूरी नहीं कि आप CS डिपार्टमेंट के अंदर ही साइबर स्काउट्स को नॉमिनेट करें. You can nominate one person from every department as a cyber scout. Make them a cyber scout. Make a cyber scout team. One or two persons should be leading from the CS or cyber security team, and this is how we can spread the cyber security information in all departments. We should not be focused only on the CS department or software engineering. So cyber security is a requirement and should be mandatory for all of the students. How financial sector can add value? Strong governance, not for the sake of governance, but real governance. ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज लिख दी गई हैं और कुछ चेकलिस्ट बना दी गई है. पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी ACL, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो स्टेट बैंक के एक ऑडिटर आके वो टिक मार्क लगा के चला जाता है. नो, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का मतलब ये है, गवर्नेंस मैं इसको यूजुअली आई कैन टेक इट एज अ फ्रेमवर्क, और जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि प्रोसीजर्स भी उसके अंदर मेंशन होने चाहिए. ओके, ACL शुड बी देयर, बट ACL के अंदर एग्जैक्ट डिटेल्स क्या होनी चाहिए शुड बी देयर इन द फ्रेमवर्क, इन द प्रोसीजर. बिकॉज एक बैंक के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं या जिनकी सिक्योरिटी की टीम है, दे विल सिंपली फॉलो the compliance lines, कैसा पासवर्ड होना चाहिए, and they will do this. खत्म. And of course स्टेट बैंक भी आके उसको yes 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 करके ओके कर देंगे. But it is you're not protecting
पासवर्ड है लेकिन पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है, पासवर्ड स्ट्रांग है लेकिन मल्टी फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टर है बट सबके साथ यूज है, शेयर्ड है, सबके साथ शेयर्ड नहीं है, बट 6 महीने से 6 साल से एक ही पासवर्ड चल रहा है, पासवर्ड इज देयर, 6 महीने से 6 साल से भी नहीं चल रहा, जल्दी कर रहे हैं, बट उसका जो एसेट जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं उस पासवर्ड के थ्रू, उसका एक्सपोजर सबको है. So these are all things which needs to be covered in the governance and the procedures. Compliance is again part of the governance. तो उसकी compliance के अंदर ये checklist के अंदर डालना चाहिए. Data protection. Again, first we need to classify the data. Which data needs to be protected? Let me share with you. I'll not say the name of bank. एक बैंक को मैंने फोन किया. I need to check either I have 1 or 2 accounts with your bank. So just I want to know that. Okay. She asked me, what is your name? Okay, I told you Irfan-ur-Rehman. I told him Irfan-ur-Rehman. Say nicely. Okay. What is your mother name? Why should I tell you my mother name? You got my CNIC, you got my full name. So it should be enough for you just to know that how many bank accounts I have in your bank. Why do you want to know my mother's name? Mother name के बाद आप date of birth पूछेंगे. So that means I'm giving you all of the information. And then you can use it or you can misuse it. How can I trust you? There is no risk acceptance signed by the customer, offered by the bank. जिसके अंदर ये लिखा हो कि customer relation officer जो है, if they are asking you for any of the information, bank is responsible for that. So why should I give you? So these are the things which banks need to look into it. Cybersecurity national force. नेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात जहन में आती है डिफेंस के लोग, पुलिस के लोग, टेलीकॉम अथॉरिटी. साइबर सिक्योरिटी नेशनल फोर्स, इसको कोई एक डिपार्टमेंट लीड नहीं कर सकता. एवरीवन टू हैव टू प्ले देयर रोल. देयर शुड बी सेपरेट साइबर सिक्योरिटी नेशनल फोर्स फॉर द banking sector, for the financial sector, for the telecom sector, and the other sector as well. SOC or CERT. SOC is a security operations center. CERT is the incident response team. SOC, financial SOC को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बंदा ही अंडरस्टैंड कर सकता है. उसके अंदर जितने इवेंट्स आ रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उसके वेक्टर्स को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बंदा ही ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है, रादर देन कि एक टेलीकॉम का बंदा या एक कोई और उसमें बैठ के SOC के अंदर मॉनिटरिंग करें, एनालिसिस करें, वो नहीं कर सकता. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बिजनेस को समझता है, ही कैन डू बेटर. इंसिडेंट रिस्पांस टीम, जो अगर आपका कभी कोई अटैक हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, तो उस रिस्पॉन्स के लिए भी देखिए वन मैन शो कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस केस. ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रिस्पॉन्स टीम है नेशनल वाइड and they are responding to all type of the events and incidents. So there should be a separate SOC and CERT for the financial sector as well. Same is with the telecom sector. Governance, compliance, data protection, national force, and security operations center and CERT. Media. Media can play a very vital role in this case. Media security advertisement तो कर सकती है. मीडिया और बहुत सारी चीजों की एडवर्टाइजमेंट कर सकती है. व्हाई नॉट साइबर सिक्योरिटी? इतने जो सारे एड्स चल रहे होते हैं उसमें अगर एक एड सिर्फ ये आ जाए, प्लीज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्लीज डू नॉट ओपन वेबसाइट विद HTTP, प्लीज डू नॉट लुक इनटू ईमेल जिसका सब्जेक्ट ये आ रहा है, दिस इज द करंट ट्रेंड. सो व्हाई डोंट वी डू दैट? एंड मीडिया कैन प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, ट्रस्ट मी. जो अवेयरनेस हम देना चाहते हैं उसमें मीडिया इज द वन जो अगर सपोर्ट करे तो we can really add value. Great Firewall of Pakistan. This is on the national level. China is have already introduced the Great Firewall of China. That doesn't mean कि दीवार खड़ी कर दी boundary walls को. As I said कि जब traditional wars होती थी तो हम borders के ऊपर लड़ते थे. But now there is no boundaries when we are over the internet. So Great Firewall of Pakistan, I mean to say that we shouldn't be using WhatsApp, we shouldn't be using Facebook, we shouldn't be using Twitter. Why we don't have our own applications that we can use? So at least our data is with us within the country.
and we can look into the complete security of our internal data. Right now, we are using Facebook, Twitter, LinkedIn. They are all outside. So our all data is there, and they are developing a complete analytics of our all, uh, people who are living here, and they can get to know that how what we do usually, what are our interests and all these things. So we should have our own social media platforms with us. We should have a, I call it, mind your data, MUD, mind your data, the close internet network, internet within the Pakistan. So if we can have all these social media platforms with us, trust me, we will reduce the information security risk exposure to the globe at least up to 60%, because 60% of the data will be with us. Only 40%, this is what we have to, like for the Gmail and for other stuff, we have to use that. We can't do it. So I would suggest this Great Firewall of Pakistan. I have proposed it on multiple platforms, but sharing with you guys, इसकी reason सिर्फ ये थी, you guys are students, so please work on these social applications for Pakistan, social media platforms for Pakistan. आप लोग उसके ऊपर जरूर काम करें. You are students, you might be looking for research works, so please do work on it. So, done from my side. Thank you very much. I'm here for any question. If you have, please do let me know. Thank you. Yes, Jawari, I'm done. Okay, sir. Sir, kindly see your chat box. You can answer the questions. Okay, sure. How can we, Osama Nasser is asking how we can protect our information which is handled by a third party. Okay, whenever you are giving your information to a third party, so 20%, 30% risk to aapka wahin pe you are taking it, because you are sharing your data with the third party. So always look into it. Agar aapko koi data share karna bhi, this is mandatory. So always जब जो भी आपका कोई रिस्क होता है जिसमें आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, you have to take up, so always try to reduce it. आप इतनी इंफॉर्मेशन दें जिससे आपका काम हो सकता है, उससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन आप भरते हैं. But on the other side, you can sign some legal documents with them. Let's suppose मैं example देता हूँ, telco companies, if you are going to buy a SIM for your phone for the calls, तो already एक फॉर्म होता है, उसमें एग्रीमेंट साइन होता है, और एक उसमें ऑलरेडी वो आपके जो प्राइवेसी है उसके ऑलरेडी वो टेक केयर कर रहे होते हैं. सो इफ दे आर गोइंग टू इफ दे expose your data, you can sue them. So same case you can follow with other third parties as well. Okay, Shahzeb Khan, all in one channel, how can Google be trusted without personal information? The admin can Wireshark be used to capture encrypted messages, can encrypted data handled by third party creations, or how can we buy our own software in cheap price? Okay. My friend, this is our unfortunate कि गूगल हमारी रगों में बस गया. गूगल से शायद आपका छुटकारा पॉसिबल ऐसे नहीं है इतनी आसानी से. You have to work on it. आपको गूगल की तरह का एक और प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा. Just for your Pakistan, I will give you an example of China. China is not using Google anymore. They worked a lot. उन्होंने अपनी काफी efforts उसके ऊपर put किए हैं. So we can do that for our country as well. Do work on it. लेकिन एक राज तब तक राज है जब तक आपके दिल में. अगर आपने अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दे दिए, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड दीज थिंग्स, ये फॉर द सेक ऑफ के दिल की तसल्ली के लिए तो ठीक है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट 100%. Okay, without cybersecurity technical background, secure his mobile, how we can as a layman. अभी मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए थे. पिन कोड, पासवर्ड, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो जरूर उसकी कॉशंस पढ़ें. कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें उसकी परमिशंस को जरूर देखें.
वायरलेस को कनेक्ट करते हैं तो उसको देखें, ब्लूटूथ को ऑफ रखें. These are all the points which you can cover, और एटलीस्ट आप सिक्योरिटी की कुछ लेयर्स उसको मेंटेन कर सकते हैं. अगेन, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, कोई और अदर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कोई भी फाइल सेंड होती है तो डू नॉट ओपन इट, डू नॉट रिसीव इट. व्हाट्सएप और इनके अंदर एक ऑप्शन होती है कि यू कैन डिसेबल, कोई भी अगर आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना करें, तो आप उसको इनेबल रखें. इफ यू हैव समवन ट्रस्टवर्दी इन योर व्हाट्सएप, जो आपको पता है आपका भाई है एंड ही सेंडिंग यू एंड ही जस्ट सिटिंग विद यू, तो आप उसको मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा. सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट एज वेल. हाउ मच कैन वी ट्रस्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लाइक ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव? 0%, no trust. So if you have any other option, do use that. If you are uploading the data which is not critical, which is not your personal data, so you can use the Google Drive for it, but never use for your personal data. How much can we trust antivirus software and Google about our privacy? Antivirus, I'm agree with you, we cannot trust, because जो antivirus बना रहे हैं शायद virus भी वही बना रहे हैं. But eventually, when you're a layman, आपको नहीं पता. So you have to trust on the antivirus. जो viruses इस company ने नहीं बनाए, बाकी viruses को at least वो prevent कर लेगा. So do use that, I would suggest you. Zunaira is asking, nowadays all apps ask for mic, camera, and data access from mobile. So it is not practically possible to stop using these apps. Is there any way we can limit this access and still use the app? This is a very uh, question जिसके लिए मुझे बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा, because the applications जो आपकी माइक और इसके एक्सेस मांगते हैं, उसके बगैर वो आपका एप्लीकेशन यूज नहीं करने देते. So you have to look into it. अगर आपके सिस्टम के अंदर आपकी पर्सनल डाटा नहीं है, और I would suggest if you can afford, तो आप उसके लिए एक सेकंड फोन रख लें जिसके ऊपर आपका कोई डाटा नहीं है. There is nothing. Use that application there. अगर ये भी ऐसा भी नहीं कर सकते, then there is always alternate available for every application. Look for the other applications जो आपके काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन they are not asking for mic and camera and contacts app permissions, so you can use that. Shazib Khan, how would Great Firewall affect freedom to access info? How would Great Firewall affect freedom to access info? Sorry, Shazib Khan, I'm not getting your point. What you want to ask exactly? Can you please write again? Okay. Altaki Wajid, Ali Wajid. Are Docker containers secure from viruses, malwares, trojans? Because as I said, these all are platforms. You have to ensure your security by yourself. जो भी अगर आप cloud use करें, आप standalone system use करें, Dockers, containers, anything, you have to look into it how you are going to secure that. So if the cloud is your private cloud, you will have आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे उसको सिक्योर करने के लिए. बट द कंटेनर्स, डॉकर्स जो आपके पब्लिक क्लाउड के ऊपर है, कहीं और होस्टेड है, सो ऑफ कोर्स यू आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोवाइडर. सो you have to look into it, what sort of security they are offering you and what you can do with that. What do you think, where does Pakistan stand in terms of cybersecurity, in terms of policy, data protection laws, etc.? I'm happy at least Pakistan ने realize करना जरूर शुरू किया और authorities ने भी. So we are now working on the policy, data protection laws. So देखिए मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि डाटा प्रोटेक्शन में क्या फ्लॉज हैं और क्या होना चाहिए. एटलीस्ट दे स्टार्टेड, एटलीस्ट दे realized कि this is the requirement now. So we are on it. Multiple authorities are working on this all stuff, so data protection and policy. So now at least we are on track. We are at least moving. Bilal Afzal, how can we improve Pakistan GCI index ranking?
I think that is not relevant to the cybersecurity, and I'll not be the best just to answer on it because there are multiple factors. Thank you, sir. Blessed to I have think such a you. great ideas. I think Sir, there's no actually, any other question. have you answered all the questions? Yeah, I think so. Okay, sir. Thank you, sir. Blessed Thank to you. have such a great ideas about cybersecurity from such a renowned professional. Seems that I have gathered the experience of decades in few moments. Thank you, sir. Thank Thank you you. once again for sparing the precious time to make us think in the new direction. Thank you, Rich. The end of the story is the new beginning for many others. We are very thankful for our guest speaker, Irfan-ur-Rehman, for their precious time. On this note, let's conclude a remarkable, memorable, and a knowledgeable event on the behalf of entire organizing team of Air University Cybersecurity. We sincerely promise you that in the upcoming days too, we will keep on organizing such proceedings with some more innovative ideas to nourish your mind and to fill you with more knowledge and excitement. Now, I would like to call Advisor of Cybersecurity, Sir Zainul Abidin. Sir, kindly would you further proceed? Okay, thank you, Jaria, for giving me a chance to speak. And first of all, I would like to thank our guest speaker, Mr. Irfan-ur-Rehman, who has taken out his precious time to address the students and the general public the very critical issue of cyber security, and especially with respect to uh, the privacy aspect of the cybersecurity thing. And let me enshrine you about this Air University Cybersecurity Society. It is definitely a very major milestone and a major step towards building a cybersecurity culture and a cyber safety culture in Pakistan. And this is an initiative of a Department of Cybersecurity at Air University that has got the privilege of launching the first ever cybersecurity program at bachelor's level. And it's also going to start two master's level programs as well. And it is also a privilege Air University to host the headquarters for the National Center for Cybersecurity. That is an umbrella, center of excellence under which there are 13 different labs in 11 different universities, technology universities throughout, who are working for the indigenization of cybersecurity, especially the development of the tools and the frameworks and the procedures for securing a national critical infrastructure and general society. So I would like to really thank Osama Nussair as well, the president of Air University Cybersecurity Society, and I congratulate all the whole team as well for making such a success. And we look forward for distinguished guest speakers like Mr. Irfan-ur-Rehman to keep visiting us, keep connecting with us, and sharing his experience and thoughts to with us, with the students of Air University and the general society. And let me also add in here that this initiative of having a cybersecurity society is not just an initiative at this university level. It's going to be a campaign for ensuring and spreading awareness about cyber safety to the general public. We're going to speak in the people's language. We're going to tell people how they can secure their privacy, because here we have two groups. One are the digital natives who are born into this technology, and another section is that is coming into this technology, that is the digital immigrants. So we have to secure the both sections of our society and all the classes and strata.
So, and this has become very critical, especially when internet is penetrating every aspect of our life in the age of mobile phones and Internet of Things, and moving towards Internet of everything, where all the data all that we generate, all the data that our environment generates is being pulled into the cloud. And we've got sensors everywhere, everything is going smart. So in that way, the issue of privacy on the top of security has also become very critical. So definitely we'll keep inviting speakers like Mr. Irfan-ur-Rehman on our platform to keep us aware about these critical issues of national and social level. Thank you so much, Mr. Irfan-ur-Rehman, and thank you so much for to Air University Cybersecurity Society. Thank you, Zen. Thank you very much.